Okay, so let's start. So today I'm covering the type 4 of my tables. And if you have any doubts from the previous ones, please let me know. I'll cover them later. But right now I'm covering the three variables one. What do I mean by that? And how do we cover that? I'll explain in the in the next part of the class. So let's begin. So what do I mean by three variables? First of all, let me explain what do I mean. If you look here, it says the table below shows the percentage of men and women workers in different types of industries in 1990, 2000, and 2010. Now, if you look properly, there are three variables in this graph. The first variable is the industries here. You can see four types of industries. The second variable is the genders, like men and women. And the third variable that we have in this graph is the years. First year, second year, third year. Basically, there are three variables: industries, genders, and years. So basically, the graph I want to cover today will have three variables. They will not have two variables. Normally, which the graphs we do have had like two variables till now. But now I'm covering the graphs which have three variables. Let me show you some other examples of this graph so that you can get a better idea before we move forward. Okay, just hold on. Okay. So the graph numbers are 179, 182. So let me go there. Okay. So like this is another example of the graph that I wanted to cover today. If you can see, there are three variables here. Firstly, there are sectors. There are four sectors here. Then you can see there are 2 years here. And then they're talking about the difficulty. Like they're talking about skilled workers, they're talking about unskilled workers, and they're talking about technical and managerial workers. So again, there are three variables. One is the sector. The second is the type of worker, skilled worker or unskilled worker or the technical. And the third variable is the year. So is it clear which graph I'm talking about? What do I mean by three variables? Is that clear? First of all, let me know. Should I compare with another graph? Okay, if you come here, you see there are only two variables here. One is this sector, like on which sector they're spending the money, or which area they're spending the money, how much they're spending on housing, shopping, food, clothing, like that. And then they're single person and couple. So there's only two variables. One is the sector, one is the type of person, like a single person or a couple. But the graph I want to cover today has three variables. For example, here there are sectors here, the types of workers here, one, two, three, and then there are years here. So I'm covering this one today. So what do I mean by three variables? Do you understand that? Is that clear? Say saviors, there are three types of different types of There are three workers variables. with Like you that. see, there are three things. Three varies. Yeah, one, two, Yes. and third. Like first is the sectors, second is like type of workers, and third is this. Okay. Similarly, let me take another graph like that so that you get an idea like this. Here again, we have three variables. See, here, the first variable is, no, I think this doesn't, yes. So there are three variables. First, we have Mm. milk. We also have butter. So you can compare milk and butter, like you can see here. Okay. Then you have high fat and low fat. And then you have age group. So you have three things. You can compare milk and butter. You can compare high fat and low fat, and you can compare the age groups. So again, there are three variables. So so this is the graph. Again, here if you look, there are three variables. First, we have age groups, then we have subjects, and then we have boys and girls. So again, three variables. I can compare boys and girls, I can compare the subjects, and I can compare the age group. Like, let me give an example. What do I mean by that? Like, let's see this. Age group 7-year-olds. Like, their performance is the best in case of boys. They perform the best in which subject? Sports. Can you see that? 7-year-old boys only I'm comparing.
63%, 70%, 63%, 62%, 71%. So they perform the best in sports. If you take 10-year-old boys also perform the best in sports. 13-year-old boys again sports, and 15-year-olds against sports. So I'll say boys of all age groups perform the best in sport or score the highest marks in sport. Now I'm comparing the subjects. I was comparing math with science, with geography, with languages and sports. And I saw that in all the age groups, the maximum scores are in sports. So that's what I wrote here. This is what I mean comparing with subject. Now let me tell you another comparison. I can compare boys and girls. Like take one age group, 7. In the 7th age group, boys are scoring how much in sports? 71%. Now take the same age group for girls and see how much are girls scoring? 65%. So boys are scoring better in sports than girls. Can you see that? In the age groups, 7-year-old boys score better than girls in sports. Is that fine? Comparison. Now I'm comparing boys and girls. Okay. Similarly, if you compare 10-year-old also, the same thing is visible that boys are scoring better. 13-year-old also and 15-year-old also. So you can see boys are scoring better. Of boys of all age groups score better than girls in sports. Now I'm comparing who? I'm not comparing subjects. I'm comparing boys and girls. Now let me take another comparison, which is between age groups. Can you see this? 7, age group 7, how much are they scoring? 71%. And what about the last age group, 15-year-olds? How much are they scoring? 78%. Now I can compare the age groups. I can say that with age, the performance got better. Do you agree? In boys, like their performance got better or their marks improved with age in sports? Can you see that? Like 71 to 78. Their performance is getting better as they grow older. In case of girls, it's the opposite. See, 65% to 60. So their performance, declined with age. Here, the performance improved with age. Here, the performance worsened with age. Okay, yes. Do you have a doubt? Anyone has a doubt here? Please let me know what I said here. Sir, could you repeat once again? Now we have to compare Yeah. horizontal or vertically. See, I am covering graphs which have 3 variables. First, understand that. So there are 3 variables here. So one is subjects, one is the age group, and one is boys and girls. So basically, instead of 2 comparisons, how many comparisons can you make? 3. Is that clear? First of all, see, you can compare the Yeah. subjects, Dheeraj. Okay. Sir, in all table, In all table meaning no, where there are 3 variables. In 3 variables, one, yeah, you can make 3 comparisons. Yusuf, is that clear? yes, sir. But now, Yusuf, let me show you one thing. देख यूसुफ, यहाँ पे मिल्क एंड बटर का कंपैरिजन बनता है, बट मिल्क के यूनिट्स क्या है ml, और बटर के क्या है? gram. सो वी कैन कंपेयर मिल्क एंड बटर अगर उनके यूनिट्स सेम होते, पर अब यूनिट्स डिफरेंट है तो कंपैरिजन होगा नहीं. मतलब वैसे 3 कर सकते थे पर एक कंपैरिजन इनवैलिड हो गया. वन कंपैरिजन बिकेम इनवैलिड बिकॉज द यूनिट्स आर डिफरेंट. इज इट क्लियर? कि मैं क्या लिखूंगा, क्या ज्यादा है तू बता. व्हाट विल आई से, मिल्क ज्यादा है कि बटर ज्यादा है? यू कांट टेल बिकॉज दोनों Yes. डिफरेंट है, एक ग्राम में एक मिलीलीटर में. सो यू कुड हैव कंपेयर्ड देम. अगर वो मिल्क भी ग्राम में दिया होता तो मैं कर लेता, पर वो मिलीलीटर में, इसलिए मेरा वो कंपैरिजन इनवैलिड हो गया. पर वैसे मैं कर सकता हूँ 3 कंपैरिजन, 3 पॉसिबल है. बाद में शायद कैंसल आउट हो जाए क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, पर वैसे करने को मैं 3 कर सकता हूँ. पॉसिबल 3 है. एक्चुअल में कितने हो पाते हैं वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ इफ उसको एक बार छोड़ते हैं, इधर आते हैं. देखो अब इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, मैं 3 कंपैरिजन कर सकता हूँ. अंडरस्टैंड दैट अगेन. देखो कैसे. एक मैं एज ग्रुप्स के साथ कर सकता हूँ. ये कंपैरिजन मैं तुम्हारे को एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ. देखो बॉयज को देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस में कितना है, 7 वाले एज ग्रुप का 62%. अब नीचे आते आते जैसे एज इंक्रीज हो रही है, कितना स्कोर रह गया उनका? 58%. तो कहना है दे परफॉर्मेंस डिक्लाइन विद एज. अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ? मैं एज को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट कंपेयरिंग बॉयज को गर्ल्स के साथ. गर्ल्स का कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ लैंग्वेजेस ही रखा हुआ है, ज्योग्राफी तो देख ही नहीं रहा, सिर्फ लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ. एक सब्जेक्ट लिखा, एज ग्रुप चेंज करा, परफॉर्मेंस दिखी कि डिक्लाइन हो गई. यूसुफ क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये कंपैरिजन किसका हुआ? एज का हुआ. नाउ आई कैन कंपेयर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो. अगर अब तुम देखो लैंग्वेजेस को देखते हैं, देखो 7 वाले में 62 दोनों की बराबर है.
10 वालों में देखो बॉयज के 60 हैं, गर्ल्स के 67 है। 13 वाले में गर्ल्स के बॉयज के 60 हैं, गर्ल्स के 65 है। 15 वाले में 58 है, 75 है। तो बताओ, अब मैं बॉयज एंड गर्ल्स का करूंगा तो क्या लिखूंगा, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है? बॉयज नहीं, सॉरी गर्ल्स गर्ल्स परफॉर्म बेटर। ये अब किसका कंपैरिजन होना यूसुफ? गर्ल्स एंड, बॉयज तो ये सेकंड कंपैरिजन हो गया। नाउ यू कैन कंपेयर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। चल 7-year-olds बता, विच सब्जेक्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है बॉयज का? सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है? 7-year-old स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। 10-year-old में? 10 years old में स्पोर्ट्स 13-year-olds में? स्पोर्ट्स 15-year-old में? स्पोर्ट्स अब हमने किसका कंपैरिजन करा? सब्जेक्ट्स का, और हमारा आंसर क्या आया? स्पोर्ट्स। ठीक है, अब हम देख, अब ये थर्ड कंपैरिजन हो गया। सो आई टॉट यू दैट देयर आर 3 comparisons पॉसिबल इन सच ग्राफ्स। यू कैन कंपेयर, जो भी 3 वेरिएबल है तीनों को कंपेयर कर सकते हो। अगर तुमने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये तीनों कंपैरिजन करने पड़ेंगे। कैसे करने वो मैं सिखाऊंगा, पर तीनों करने पड़ेंगे। अगर तुम नहीं करोगे, यू आर मिसिंग आउट सम इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट टेलिंग द एग्जामिनर सम थिंग्स दैट यू शुड हैव टोल्ड द एग्जामिनर। सो मेरे को नहीं लगता यू कैन स्कोर दैट वेल अगर तुम तीनों चीजें नहीं करते हो। Sir, यस, there are lots of data in this आई नो graph. I'll try to I'll समीम, मैं बताऊंगा कैसे करना है कि शॉर्ट में हो जाए, पर हमने करने तीनों है। इज दैट क्लियर? Is it possible to It is possible. cover I'll teach you. I'll each teach and you how. each and every data? I'll teach you how to do it. Okay? Okay, I'll sir. teach you in short. ठीक है, वो घबराना नहीं, पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि 3 comparisons possible है। Is that clear? The 3 comparisons are Yes, sir. possible? Yes, sir. It is clear. Okay, चलो, let's see another one. Example. Let's take another one. I'm just teaching you जहाँ पे 3 है, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी 3 है. Can you see that? So you have years, you have 3 areas, and you have 4 types of dwellings. So you can compare 3 things. You can compare the areas. अब बताओ, houses सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर है? Which area? Out of the 3 areas, houses कहाँ पे पॉपुलर है? पहले 2001 में Tasmania. which region? Tasmania. 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 Yeah, very good. And second year? Second year में Victoria. कहाँ? Oh, second house. Tasmania again. Yeah, Tasmania again, houses का. So in both the years, houses were the most common or most popular in Tasmania. Can we say that? Yes, sir. तो ये कंपैरिजन हुआ एरियाज का। नाउ यू कैन कंपेयर years. अब बताओ, हाउसेस की पॉपुलैरिटी विक्टोरिया में इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? Decrease. Decrease. डिक्रीज। व्हाट अबाउट नॉर्दर्न टेरिटरी? Also decrease. Decrease. डिक्रीज। एंड तास्मेनिया? Again decrease. 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 So we can write the popularity of houses decreased in all the 3 areas with time. Is that clear? That is comparing years. Now you can compare houses with, Over the specified period. yeah, over the 5, yeah. And then you can compare the houses also. अब बताओ, विक्टोरिया में सबसे पॉपुलर क्या चीज है? कौन सा हाउस है चारों में से? House. House. What about Northern House. Territory? House. Again House. house. And what about Tasmania? House. Again House. house. Again house. So you say that. देखो, अब ये तो एक ही लाइन में हो गया, सबका सेम है। Similar. Yeah. Yes, sir. Okay. Hold on 1 second. I'm getting a call. Hello? Yes, sir. Okay. So like that, there are 3 variables. Now you can see other graphs with 3 variables. I've written all of them. So जो मैंने file share करी है ना, I made it so easy for you. You can just look at that sheet and see कि कौन सा graph 3 variables वाला है, so that you can practice easily and you won't have any issues. So after 187, we have 196 directly. Are you recording, sir? Yeah, I started recording it. Yes. Okay. So again, if you can look here, there are 3 variables. Okay. First, men and women. Second, years. And third, sectors. Sorry, I'm not showing you the right graph. So you can see 3 variables: men and women, years, and sectors. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
And now the last one, like that. So basically, this is the graph I want to cover today. अब ये वाला graph cover करना है. अब देखते हैं इसको कैसे cover करना है. And I'll teach you everything about this graph. Okay. And one last one is here. I think, yeah, this is the last one. Again, you have three things like urban and rural areas, then the sectors, and then you have the years. Okay. So now let me teach you how to do this. देखो, तीन comparison बनते हैं. एक years वाला, एक urban rural areas का और एक इन चारों का. तो पहले तो let me read the graph for you. Let me read the graph for you and tell you. Okay. Just 1 second. They're calling again. Just one. Hold on. Okay. Sorry. Okay. So now I want to tell you something. देखो, years वाला comparison. If there are years, वो वाला comparison हम body paragraph के लिए रखेंगे. We will not do that in the overall. Why don't I want to do that in the overall? Because that one you can elaborate better and increase and decrease के sentences to form increase and decrease sentences. It is much simpler. So you are not going to compare the years in the overall. वो भूल जाओ. Overall में वो काम नहीं करना है. तो वो हम body paragraph के लिए रखते हैं. Let it be. एक बार उसको side पे रख देते हैं. ठीक है. Now what are we going to do? We are going to compare the this thing and basically we are going to compare top to down like this. इनके बीच में comparison करेंगे और urban and rural के बीच में करेंगे. पर एक एक करके. जल्दी मत करना. अगर तुम जल्दी करोगे खराब हो जाएगा. So don't be in a hurry. I'll teach you how to do it properly, but you have to be patient. Don't be in a hurry. तो चलो let me teach you how to do it. चलो पहले चारों इनको प्ले करते हैं. तो अब देखो ये क्या है जो पार्ट टाइम फ्री टाइम एक्टिविटीज है. रीडिंग, एनिमेटेड प्ले, प्लेइंग एंड फोटोग्राफी. तो चलो मैक्सिमम लोग क्या कौन सी एक्टिविटी करते हैं अर्बन एरियाज में? Reading. Reading. Right? In 1990. ठीक है. And what about rural areas? Reading. Now look at the second year. Reading is maximum in all areas. Maximum. Okay. So in both the years, maximum reading, and in both the what also? Urban and rural areas. Rural. Now make this sentence. So maximum adults, okay, participated in what? Reading. Reading in both urban Both. areas In Urban both and urban rural. and rural areas and in and both both the. the years. Yeah. 99. Yeah. So write it properly. Don't miss out anything. So a lot of you have a habit of not saying years or have a habit of not saying urban and rural areas. Please say that. Otherwise, it will be an incomplete comparison. Is that clear? और देखो कितनी जल्दी हो sir. गया. You compared all the 4 areas, one sentence. Overall में वो बन गया. Is that clear? Sir, Yes. we may say by this overall it can be observed that reading was the maximum both urban and rural area in the over the In both the specified period. in In both both the years or over the specific reading was the maximum की जगह लिखना होगा. Reading was the most popular activity. Reading was the most popular activity. most popular activity. Okay, sir. Okay. Oh, here they mentioned this part in 4 free time activity. That means most popular activity. Sorry. In question, they mention it that the table below shows the percent of adults in urban and rural areas who took part in 4 free time activities. That means most popular activities was reading. Yeah, both the years and both. Okay, so this is done. Now let's come to the second comparison. Okay, now you're going to compare urban and rural areas. Okay, the word here is going to be more. I told you why more. When we compare two things, what's the word we use? 2 things. More. More. Not maximum. Okay, chalo, अब बताओ. एक एक करके. You do everything together, you will mess up. So let's start with reading. कहाँ पे more popular है in 1990? Which area? Rural or urban? Rural area में. Rural area में. Okay, so 1990, this is rural. Okay.
Now compare animated play. Which area? In all sector, rural area was the Rural area. more. Okay. Done. Now let's see urban area. Okay. Where is this more popular? Equal? Here is also rural Yes, area yes. was the most popular. This one, rural. Rural, This one, rural. rural. Okay. Except reading in Yeah, but that we can 2010. Yeah, but that we can ignore that. So in general, tell me which all the activities are more popular in which areas? Rural area. Rural area. Rural Or area. more adults participate in all activities in rural areas as compared to Urban area. Urban area. in both the In both the years. Both 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 years. the years. now you've compared what? You've compared urban areas and rural areas. And you're Sir, yeah, we can say in all the years because 10 years gap. 20 years gap, but in all the years कैसे? बीच वाले सालों का थोड़ी पता है. You don't know what happened in between. What happened in 2000, you don't know. Sir, So- may we say that given period Sorry. Let me over the given period? why? we say that? Because but you don't know, no, over the given period. You don't know what happened in the middle. Okay. Just You know, both. you know only information for 2 years. मेरे को 2 years में Okay. क्या पता है in both the years. Okay, you सिर्फ all the years लिख Okay, सकते हैं. sir. अगर 2 से ज्यादा होंगे तो हम all the years लिखेंगे. अगर 2 year होंगे in both the years. Okay, sir. Both the years. Okay, Yusuf, is it clear or do you have a doubt? Ask. No, sir. Clear, sir. Thank you. Clear? Okay. So now let's move on to the next part. Now let's come to body paragraph. Body paragraph. Sir, if there is 3 years, then we can say over the given period. Then we can say in all the 3 years. All the Simple. ठीक है? In all the 3 years. We don't know information between the years. Understand that. I know information for 1990. I know information for 2010. Do I know what happened in middle? No, sir. No. Yes. That No, is why I'm not writing over the given period. I'm writing in both the years. For maximum, I don't write over the given period always. I've done this with you. Never for maximum and more, I'm going to write over the given period. मैंने कभी नहीं लिखना. I will always write in both the years or in all the years. I will never write over the given period in the maximum or more sentence. Never. I will only write over the given period in the increase or decrease sentence. क्योंकि वहां पे मैंने लिखना है period में increase हुआ. Between these 2 years, it increased. I don't care about the rest of the things. Now, let's go. Can we go to the next part? The body paragraph? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. what you're going to do is now, you're going to divide your paragraphs. So first of all, I decided now you're going to make the year comparison. Is that clear? Year Yes, का sir. करना ना वो रहता है. I told you to we are going to leave that comparison for the body paragraph. तो देखो हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ अर्बन का कर लेते हैं, एक रूरल का कर लेते हैं. So paragraph 1. Right now, please stop looking at the rural data because you're not doing that comparison. वो कर ही नहीं रहे हो. तुम अर्बन का कर रहे हो. वो सेकंड बीपी में देखेंगे. अभी अर्बन का देखो, रूरल को भूल जाओ. अब बताओ. Okay, sir. First activity, what happened? Increased or decreased? Increase. Increased. Second activity, Remain Double. same. third activity, Decrease. fourth activity. Decrease. Increase. Increase. ठीक है. अब क्या करना है? पहले इंक्रीज वाली दोनों लिखना, फिर डिक्रीज वाली लिखना और फाइनली स्टेबल वाली लिख देना. समझ में आया? Okay, sir. पहले लिखना sentence. रीडिंग एंड नहीं सर. देखो हम पहले लिखेंगे कि रीडिंग एंड फोटोग्राफी में जो पार्टिसिपेशन थी वो टाइम के साथ क्या हो गई? इंक्रीज. गुड सब Increase. ठीक है. फिर Yes, हम sir. डेटा देंगे. कितने लोग पहले करते थे रीडिंग? 61% अर्बन एरिया. 61%. बाद में कितने लोग कर रहे हैं? 78%. 78%. ठीक है. Okay, फिर sir. फोटोग्राफी का भी बताएंगे कि इंक्रीज फ्रॉम 7% टू 17%. हो गया? Yes, sir. Respectively. मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ. तो रूरल तो अभी हम वो तो रूरल का पैराग्राफ ही नहीं. अभी पैराग्राफ ही किसका है? अर्बन. अर्बन. जब रूरल का होगा तो Okay. रूरल देखेंगे, अर्बन को इग्नोर मारेंगे. अभी तो हम रूरल एरिया की Okay. बात कर रहे हैं, अर्बन Okay, एरिया sir. की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब प्लेइंग का ठीक है. देखो. प्लेइंग में बताओ क्या हुआ? डिक्रीज. Increase. नहीं, Decrease. decrease. Sorry.
ठीक है। Yes, sir. हम लिखेंगे Decrease. बाय कंट्रास्ट प्लेइंग की पॉपुलैरिटी और प्लेइंग में पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो गई 21 Yes, से sir. 14 हो गई। And 40%. finally we'll talk about animated play. The percentage remains Similar. same. Yeah. Remain same. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubts? No, No, sir. sir. That's it. Done. Body paragraph is done. Now you do the same thing for rural areas. अब किसको इग्नोर मारना है, किसके ऊपर कांटा मार लो ताकि Urban को Urban, urban. urban हाँ, अब देखना ही नहीं अर्बन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों Yes, करना sir. अपने आपको कंफ्यूज? तुमने तो ईयर्स का कंपैरिजन करना है, तुमने अर्बन रूरल का तो करना ही नहीं। बताओ क्या हुआ? Hmm. Increase. Increase. Okay, increase. What happened to the next one? Decrease. Next one? remain Remain. same Increase. Next one? and increase. 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 अब ये लिखना, पहले इंक्रीज हो गए फिर डिक्रीज वाला लिख देना, फिर स्टेबल वाला लिख देना। Very simple, but a few minutes ago it was very difficult for me. Okay. Hmm. Now simple. Two Yes, sir. comparisons Now in the, now very we, simple. we did all the three comparisons, Sameem. We compared the Yes, sir. sectors, we compared urban areas and rural areas, and we compared the years. The comparison between these thing activities and urban and rural areas we did in the overall. The comparison between Okay. years we did it in the body paragraphs. Is it Sir, clear? sir, we can use in playing, we can use by contrast. हाँ, प्लेइंग के बाद प्लेइंग और सॉरी हाँ, रीडिंग और फोटोग्राफी के बाद हम बाय कंट्रास्ट लगा सकते हैं, और फिर हम एनिमेटेड प्ले की बात भी कर सकते हैं, प्लेइंग की भी बात कर सकते हैं। इंक्रीज के बाद जब ट्रेंड चेंज होगा तो तू बाय कंट्रास्ट लगा सकता है यूसुफ, ठीक है। किसी के लिए भी, डिक्रीज वाले के लिए भी लगा सकता है, स्टेबल वाले के लिए भी लगा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's pick another one. Now you tell me whether you can do it or not. I'll finally write one and then that'll give you more clarity, but let me show you another one till then. Let you try another one. Three variables. Yes, sir. Okay, we are, so देखो लिखने में मुश्किल होते हैं पर easy होते हैं। चलो करते हैं। There are three comparisons possible. Again, tell me which ones. पहले तो question पढ़ो. The percentage of workers. They will Yeah. men and women workers in different types of 1990, 2000 and industries. 2010. 1990, 2000 and 2010. So this is the Summarize the industry. information by selecting Yeah, this part you can ignore. This part is same. Okay, so ये चार industries हैं. industries, men versus women, Yeah, and the third one. and the third one is Yes. year. Yeah, And to Very 3 good. years. yeah, Trupti, very good, very good. Okay, so now This is three Oh. variables: three variables. men and women, year, and sector. Okay, and years वाला हमने कहाँ करना है? years को टेबल में Body करना है, paragraph. बॉडी पैराग्राफ में करना है, बॉडी Body पैराग्राफ paragraph में 1 करना है। and पैराग्राफ 2. Yeah, तो अभी हम सेक्टर्स का करेंगे, इंडस्ट्रीज का करेंगे और मेन एंड वुमेन का करेंगे। करें? Yes, overall. Yes. Yes, sir. चलो अब करो, सेक्टर्स का करो, ये चारों सेक्टर्स का करो ऊपर से नीचे आओ। यू आर कंपेयरिंग द सेक्टर्स। चलो बताओ, पहले साल में मेन के केस में सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर? Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सेकंड ईयर? Manufacturing. And they are also manufacturing. ओके, थर्ड ईयर? Manufacturing. Men. Also manufacturing. Sorry, retail. I'm sorry. रिटेल। ठीक है, डन? ओके, Yes, sir. Sir, 2000 in 2000 also manufacturing. No? या मैंने एम ही लिखा है, मैंने एम इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आर इज फॉर रिटेल। MMR Okay, sir. is for Okay. okay, I'm writing M and Mm. R. Is that clear? Mm. Yes, Yes. sir. अब इधर बताओ, फर्स्ट ईयर? Tourism. Two. In all the years All. tourism. Yes, sir. On the Manufacturing. yes, tourism. No, not manufacturing, tourism. देखो, tourism All Okay. कहाँ है? यहाँ पे sector tourism नहीं है? tourism 23. was the maximum. यहाँ पे क्या है? tourism. Mm-hmm. यहाँ पे भी क्या है? Tourism. ओके, तो Also चलो अब एक काम करो, इसको इग्नोर मारो, मैन्युफैक्चरिंग ही ले लो। सो मैक्सिमम मेन वर्कड इन विच सेक्टर? Manufacturing. While the Manufacturing. maximum women worked in? Tourism. 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 अब तुमने इसको इग्नोर मारा था, तो तुमने ना अब इन ऑल द 3 years नहीं लिखना, तुमने उसकी जगह लिखना है इन जनरल। इन जनरल का मतलब है आमतौर पे। अब तुमने क्योंकि एक साल में तुमने वो करा है, तुमने गड़बड़ करी है, क्योंकि तुमने सारे सालों का नहीं बताया। सो डोंट राइट इन ऑल द 3 years,
वो गलत लैंग्वेज हो जाएगी। सिंपल करने के लिए हम लिखेंगे इन जनरल maximum men worked in which sector? Manufacturing, while maximum women worked in tourism. 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 But then all the 3 years मत लिखना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इन जनरल Okay. बात कर रहे हैं आमतौर पे, क्योंकि एक साल में ऐसा नहीं भी है। तो इन ऑल द 3 years लिखोगे तो वो गलत है, पर अगर तुम लिखोगे आमतौर पे तो वो सही है। आमतौर पे ज्यादातर मैन कौन से सेक्टर में काम कर रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग में। और आमतौर में Manufacturing. मैक्सिमम विमेन वर वर्किंग इन विच सेक्टर? टूरिज्म। ये पहला कंपैरिजन Tourism. किया। सर जी Yes, Okay. sir. Yes. Okay. What did we compare? We compared the 4. ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ Sector. ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ Sector. ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬੀਪੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ हाँ ਤੇ बीपी ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਚ ਨਿਬੇੜ देने हाँ तो अभी हाँ वही कर रहे हैं ना, अभी एक ही ट्रेंड करा है, कौन से वाला सेक्टर्स का? इंडस्ट्रीज का। कर लिया ये। Yes. ठीक है, अब मेन एंड वुमेन का करते हैं। चलो अब पिछला ना, अब तुम लिख लेना। चलो अब आ जाओ रिटेल। पहले साल में कितने मेन? 13 विमेन कितने पहले साल में? 7%. 7 कौन Seven. ज्यादा है? ਮੈਂ कौन ज्यादा? ਮੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਟੇਲ ਚ चलो मेन ज्यादा है तीनों ईयर में। ਹਾਂਜੀ हाँ. Can you see that 13-8 13-9 मेन ज्यादा है। एग्रीड। Yes. Yes, Yes. sir. रिटेल के सामने मैंने मेन लिख लिया। चलो अब हेल्थ में बताओ, पहले साल में कौन ज्यादा है? Women. Women. Women maximum है. Women ज़्यादा. ਤਿੰਨਾਂ ਚ पहले women पहले ਜ਼ਿਆਦਾ पहले समीम, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? मेन एंड वुमेन। कौन सा वर्ड नहीं आएगा मैक्सिमम? कौन सा वर्ड आएगा? More. men ਤੇ women मोर। मोर आएगा। More मोर आएगा। ठीक है, 7 और 9 कौन ज्यादा है? विमेन विमेन विमेन। तो तुमने लिखना है। More. women ही ਜ਼ਿਆਦਾ वेरी गुड। चलो अब मैन्युफैक्चरिंग में बताओ कौन ज्यादा है? Men more. Men. men ਤੇ Men. तीनों सालों में। Mm. ਹਾਂਜੀ Yes. Men. देखो प्लीज ऐसे मत tourism ਚ करना। women अच्छा एक सेकंड, मेरे को एक बात बताने दो। प्लीज ऐसे मत करना, 30 को 8 के साथ मत कर देना। प्लीज डोंट डू दैट। 30 का कंपैरिजन किसके साथ होगा? 3 के साथ. Seven. ये 10 के साथ. 7 के साथ. 15 का किसके साथ होगा? 8 8 के साथ. 8 के साथ. 10 का किसके साथ होगा? 3. 3 3. के साथ. Respectively. हाँ ऐसे मत करना, एक का 2000 का, अगले का 2010। समझ में आई बात? ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. हाँ अच्छा, अब टूरिज्म का तीनों सालों में विमेन आ रहा है। Women. अब लिख Men सकते का हैं। 2, women का 2. हाँ तो लिख लेना, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में proportion of men was more than women, while in health and tourism proportion of women was more than men. Is it clear? Yes, sir. सर Yes, sir. एक में men ज़्यादा है, एक में women ज़्यादा है ना. नहीं, दो में Two. 4 हो गए ना। देख, 2 में कौन ज्यादा है? मेन। और 2 में कौन ज्यादा है? Women. Women. वुमेन। तो हम लिखेंगे ना, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में proportion of men was more than women, while in healthcare and tourism proportion of women was more than men. Man. Men. Is it clear? Yes. Yes, sir. Anyone has any doubts, please let me know. No, sir. Sir, one small doubt there. हाँ You told we have to compare 1990 of male with 1990 of female. हाँ So in body paragraph, if we want to write, can we how to write those 2 paragraphs, sir? अभी हमने करा नहीं, वो अभी हम करने, अभी ओवरऑल क्लियर है। Okay. ओके No, okay. So yeah, acha. This 1990 and 1990. This is only for proportion graphs, huh? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके धीरज, वी वे कंपेयरिंग मेन एंड वुमेन, कोई प्रोपोर्शन से लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, हमने Okay. करा और हमने ओवरऑल लिख दिया, हो गया, ओवरऑल हो चुका है। 1990 का अकेले नहीं बताने वाला, मैं सारा बता रहा हूँ, क्योंकि सारे सालों में एक ही बात है। Why would I tell for Sir. 1990? क्या? ਸਰ हाँ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖ के ले आऊंगा ओके चल, फिर देखो मैं दे देता हूँ, यू कैन लीव एंड यू कैन डू इट। ओके सो तो ये वाला कर ले। मैं तेरे को भी ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके सर ओके ठीक है चलो, फॉर द रेस्ट ऑफ यू अब देखो, दोबारा एक बार कर रहा हूँ। धीरज प्लीज पे अटेंशन नाउ, ठीक है। देख,
we were comparing the sectors को compare कर चल करते हैं compare यहाँ पे बता कौन सा sector आया सिर्फ 90 men बाकी सारा ग्राफ इग्नोर मार दे अभी ignore everything Manufacturing. manufacturing now do it for Vertical. right Yeah, for vertical. first year Yeah, now do it for the second year Manufacturing. third year Third year, manufacturing and tourism. no 2010. Retail. 10 both are same, right? I don't Sorry, care about the same. Retail. Okay tell me Highest number, tourism. next year This is tourism. next year Tourism. now I said in general maximum men worked in which sector For example, worked in manufacturing sector. I did not consider retail because I said in general. मैंने एक Okay. साल को ignore मारा है. And maximum women worked in which sector? Tourism. That's my first feature. Is it clear? Okay. Done. Now, what did I compare? I compared the 4 sectors. Is that clear? Yeah, okay. Understood. Now I'm comparing men and women. Please pay attention. Now I'm comparing men and women. Okay. Okay. Yeah. कौन ज्यादा है बताओ? Men. Second year. Men. Third year. Men. तीनों सालों में men ज्यादा हैं. Can I write men in front of retail in all the Yeah, three? yeah. Do it for health, वहां पे आंसर निकल के आता है women. Do it for manufacturing, आंसर निकल के आता है men. Do it for tourism, आंसर निकल के आता है women. आ गया देख फर्स्ट ईयर कौन ज्यादा है women. Second year कौन ज्यादा है women. Third year कौन ज्यादा है women. In all the 3 years it is women. Women first year 7-9. Women second year 7-11. 11 is more. Women third year 9 and 15. Women is more. Is that clear? Yeah. तो 2 सेक्टर्स में मैन आता है 2 में विमेन आता है अब ये लिख देना है कि 2 में मैन ज्यादा थे while 2 में विमेन ज्यादा थे that's it in all the 3 years okay now the 2 comparisons are done one between sectors and one between men and women now the third comparison is left which is between what Yeah. Between same year. years 1990. okay अब ये years वाला आना है third body paragraph में अब तुम एक काम करो one paragraph will write for men one for women तो अभी women को भूल जाओ क्योंकि हम women की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं Men. चलो रिटेल में क्या हुआ बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे ट्रेंड क्या लिखूंगा It is same. स्टेबल या हेल्थ Slight increase. इंक्रीज ओके मैन्युफैक्चरिंग Decrease. टूरिज्म Decrease. ठीक है तो पहले तो डिक्रीज वाले लिख दो फिर इंक्रीज वाले लिख दो फिर स्टेबल वाला लिख दो डन बताओ एनी डाउट्स बताओ व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हेन आई से दो Sir, in first graph, या यूसुफ से sir, in first graph, first body paragraph, first Yeah. paragraph, फर्स्ट पैराग्राफ हम सिर्फ मेन का देख रहे हैं ठीक है हमने विमेन को देखा ही नहीं ठीक है हमने पहले डिवीजन कर ली कि एक पैराग्राफ में मेन का बनाऊंगा एक में किसका बनाऊंगा विमेन women, ठीक है अब मेन में देख 4 है 2 में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एक में इंक्रीज हो रहा है एक में स्टेबल हो रहा है तो पहले मैं 2 कौन से लिख दूंगा decrease, फिर मैं कौन सा लिख दूंगा increase, और फिर मैं कौन सा लिख दूंगा step, That's it. And I'll be done here. Then I'll do the same thing for women. Okay, let's do women now. चलो पहले बताओ रिटेल में क्या हुआ increase, ठीक है हेल्थ में increase, Increase. मैन्युफैक्चरिंग increase, Decrease. decrease, sorry, हेल्थ केयर टूरिज्म increase, Increase. पहले तुम ये तीनों लिखना जिनमें इंक्रीज हुआ है फिर बाय कंट्रास्ट लगा के कौन सा लिख By दे contrast. Decrease. मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज वाला retail, health, and या tourism. टूरिज्म डन क्लियर Yes, sir. Yes. और मिडिल ईयर का डेटा देने की जरूरत नहीं है Hmm. ओके Sir, in also man, या you सेम can skip. Yes. या मिडिल ईयर स्किप मारो doesn't matter skip the middle year doesn't matter it's a big graph skip the middle year so that you can complete it is that fine Yes. Yes, Yes, sir. that's it so it's Yes, sir. okay
So 3 comparisons, 2 कहाँ पे करने हैं? Because here said the main feature. That means we have to focus on our main trend. That Yeah, means increase or decrease. Middle वालों का कोई yeah, खास बात नहीं है. yeah. मेन फीचर्स पे करना है फोकस. मिडिल ईयर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है अगर हमने मिडिल ईयर का डेटा नहीं दिया? इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, राइट? अब मेरे को बताओ, डू यू केयर अबाउट के 10 साल पहले पेट्रोल प्राइस कम था, आज ज्यादा है? यू डोंट केयर अबाउट 5 साल पहले कितना था. तुम अगर 10 साल की बात कर रहे हो तो व्हाट डू यू केयर के 5 साल पहले कितना था? यू केयर अबाउट द 10 ईयर पीरियड. तो छोड़ो ना बीच में कितना था. लेट्स इमेजिन यू जॉइन मी इन जनवरी एंड तुमने मार्च में एग्जाम दिया. अब कोई कोई केयर करेगा कि फरवरी के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए? नहीं केयर करेगा. व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट पार्ट? के जनवरी में आए थे, मार्च तक इम्प्रूवमेंट हुआ तो कितना हुआ, और मार्च में कितना स्कोर आया. फरवरी मिडिल ईयर को इग्नोर मारो, डजंट मैटर. व्हाट यू स्कोर्ड इन द मिडिल डजंट मैटर. ठीक है, सो लेट इट बी. So like that, we are going to ignore it. So ये ग्राफ ऐसे लिखा जाता है. It's a very simple graph. It's not at all tough, and I think you can do it. तीन आते हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 3 वेरिएबल से. इनफैक्ट मेरे पास तो ज्यादा लिखने को हो जाता है. I can impress the examiner more in such graphs because I can cover all the 3 comparisons. I can compare the years, I can compare the sectors, I can compare men and women. देखो, अगर अब तुम्हें किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आई ट्राइड टू मेक इट सिंपल. If you have any doubts, please let me know. All Doubt. कौन से वाला? Tripti over, yeah, you can write vice versa. Vice versa. Tripti, sorry, I saw your question now. You can write vice versa. I write vice versa only. I was going to teach that. ठीक है, Tripti. So, does that answer? Any other doubts? Yeah. Chalo, फिर should I give you one task to write? That's it. That's all there is in this graph. कुछ नहीं, और मेरे को कुछ नहीं करवाना. अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो बता दो. तुम अच्छा तो मेरे साथ एक करना चाहते हो? We can do. Okay, we'll do one together. Right now we are only looking at the year ones. Chalo, look at the year ones. Wait. सर रीडिंग होगी? अभी तो ये कर लेना पहले. ये समझ में आया आज? नहीं सर, मिस हो गया. तो इसको मेरे को अभी करवाने थे. मेरा अभी इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है. बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाद में देखता हूँ कब फिनिश होता है. लेट्स सी. ओके, लेट्स लुक एट दिस ग्राफ. नहीं सर, टेबल करा रहे हो? अभी ज्वाइन किया मैंने. टेबल करा रहा हूँ 3 वेरिएबल्स वाला, ठीक है? ओके ओके, लेट्स लुक एट दिस ग्राफ. चलो बताओ 3 कंपैरिजंस कौन से, पहले बताओ. एंड वी आर गोइंग टू राइट दिस ऑल टुगेदर. बताओ, व्हाट आर द 3 कंपैरिजंस हियर? पहले क्वेश्चन, read the question in your head, understand it, then tell me there are 3 comparisons. What are the 3 comparisons? Between what? Four sectors. Okay, very good. Years, Yes. and difficulty in finding skilled workers versus difficulty in finding technical and managerial work. That means And- unskilled work, skilled, unskilled, and technical and managerial workers. Okay, so types of workers, sectors, Types of workers. and years, right? And years. Yes, sir. Okay, अब years वाला कहाँ पे लिखना है? ये वाला body paragraph Body 1 and body paragraph 2 में लिखना है. ठीक है, तो वो छोड़ते हैं. अब वो नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, तो अब हम करते हैं. सबसे पहले स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड टेक्निकल का करते हैं. बताओ, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसको ढूंढने में आते थे मैन्युफैक्चरिंग में? बताओ, which type of worker? First, 51. कौन सा वर्कर? Commerce. Worker. Manufacturing. कौन सा वर्कर? तुम क्या आंसर दे रहे हो? मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कौन सा वर्कर. Trupti's answers is fine. Worker. स्किल्ड वर्कर. दिख रहे हो? Skilled. स्किल्ड में कितनी डिफिकल्टी है? 50. अनस्किल्ड में कितनी है? 20s में. और टेक्निकल में कितनी है? 8 और 6. तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसको ढूंढने में आ रही है? Manufacturing. Skilled worker. ठीक है, बिल्डिंग में बताओ, बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कौन से को ढूंढने में आई? कौन से टाइप के वर्कर को? Again, skilled worker. कॉमर्स में? Commerce में again skilled worker. सर्विसेज में? Again. Skilled worker. तब कितना इजी है लिखना. सारे सेक्टर्स में
मैक्सिमम डिफिकल्टी कौन से वर्कर को ढूंढने में आई? skilled worker को। स्किल्ड वर्कर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ कि डाउट है? बताओ A little bit of doubt. क्या डाउट है? देख, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एंड टेक्निकल करते हैं ना। देखो, स्किल्ड का फिगर बहुत ज्यादा है, 40-50 है। अनस्किल्ड का कितना है? 20 में है। मुझको जानना है इस वेरिएबल्स का क्या नाम दो इस वेरिएबल का। स्किल्ड को yes. ज्यादा है ना, टाइप ऑफ वर्कर है। Type of Skilled worker. Okay, sir. ठीक है। Now understood. Type of worker. Okay. Okay, so yes, finding skilled worker is the most challenging. तृप्ति, most लिखना जरूरी है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, सबसे ज्यादा, क्योंकि you're comparing. चैलेंजिंग तो तीनों है, देखिए ये भी तो चैलेंजिंग है, इतने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, पर ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है. So most word is, Sir, can we say highest? yeah, highest, also highest difficulty in finding skilled workers in all the sectors. Employers face the highest difficulty in finding skilled workers. Highest, maximum, most, anything you write, Same. meaning है. More than two. More than two is maximum. Maximum का synonym है highest. Maximum का synonym है most. All the words mean सबसे ज्यादा. Okay, Renny? All of them mean the same thing. Highest, Yes. most, or any other, maximum, all of them. Greatest difficulty, largest Yes. difficulty, all of them would mean the same. अच्छा, अब एक मेरी बात सुनो. Now we are going to compare the sectors. Sectors का comparison मैं कर नहीं पा रहा हूँ. I'll tell you why. Look at the data. First year कौन सा है? Compare first year. Skilled workers. Which Commerce. sector? Commerce. Second year? Commerce. Second year. Manufacturing. Manufacturing. Okay. Here, Also first year. manufacturing. Second year? Manufacturing. Service. Service. Building. Oh, service. Oh my. अच्छा, पॉइंट समझ में आया? सब जगह बदलता जा रहा है, कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, राइट? अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Do you agree with that? It'll be very confusing. See, first year कौन सा है? Commerce. Second year क्या है? Manufacturing. Skilled के केस में. Now you come to unskilled. First year is manufacturing. Second year is skilled. Third case, technical managerial workers. First year building. Second year also building. But it is confusing. It'll be different. It'll make my graph very lengthy. Do you agree? Yes, sir. Okay, so हम ओवरऑल में ये नहीं लिखेंगे, हम ये स्किप मार देंगे, बिकॉज आई थिंक दिस विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट. सो वील नॉट राइट दिस इन द ओवरऑल. हम इंक्रीज वाले को ही 2 बार लिख देंगे. इंक्रीज वाला एक बार हमने बॉडी पैराग्राफ में लिखना है, एक बार हमने कहाँ पे लिख देना है? ओवरऑल. इज इट क्लियर? देखो, अब ये पॉसिबल नहीं हो रहा ना, मैं कर नहीं पा रहा, इसको करना बहुत मुश्किल है, तो इसको नहीं करते हैं. हमने अपनी कंफर्ट भी देखनी है कि मैं कर पाऊं. चलो, अब इंक्रीज वाला करो. मेरे को ना बताओ, मैन्युफैक्चरिंग में, स्किल्ड में इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? Sorry, sir, again. इन मैन्युफैक्चरिंग, Increase. स्किल्ड वर्कर्स डिफिकल्टी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? Increase. Increased. Decrease. बिल्डिंग सेक्टर, Also increase. Increased. कमर्स, Decrease. Decreased. सर्विसेज. Increase. Increase. कैन आई से इन जनरल डिफिकल्टी इंक्रीज्ड? इन जनरल, Yes, sir. Except commerce. बट आई एम सेइंग इन जनरल. इन In जनरल general, yes, sir. Increasing. इंक्रीज. व्हाट अबाउट अनस्किल्ड वर्कर्स? Same. Decrease. Increase. In general. Decrease. Again increase. कैन आई से इन जनरल इंक्रीज्ड? Yes, sir. Yes. Okay, now come here. What happened? Decrease. Decrease. All All. decrease. 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 So can I say in general, difficulty in finding skilled workers and unskilled workers, क्या हुआ? Increase हुआ. While difficulty in finding technical workers, Decrease हुआ. ये Decrease. overall का feature आ जाएगा second. Is it Sir, clear? again. Sir, again. Difficulty in finding skill क्या हुआ? Increase. Can I say increase in general? In general. In general. Yes, sir.
यूसुफ इंक्रीज हुआ कि नहीं? स्किल्ड वर्क, Yes. अनस्किल्ड का भी इंक्रीज लिख सकता हूँ ना? Yes. वाइल डिफिकल्टी टेक्निकल वालों की क्या हो गई? Decrease. Decrease. So in general, difficulty in finding skilled and unskilled increased, while difficulty in finding technical and managerial workers decreased. Yes. Yes. ठीक है, कोई डाउट? No, sir. Yes. Okay. And then, what we can write for the sector in For the body overall? paragraph, for the body paragraph, right? No, sir. For the overall. ये ओवरऑल में ही लिख रहे हैं अब। इसको एक सेक्टर दिया, सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कॉमर्स एंड सर्विसेज का। वो रहने देंगे, वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं हो पाएगा तो क्यों करना है? That'll be too difficult, too complicated. Clear? देखो, ओके सर। यू डिसाइड व्हाट टू डू। कई बार आपको एक्सेप्शन करना पड़ता है। अब इस ग्राफ में मैं वो एक्सेप्शन करूंगा क्योंकि मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो चेंज होता जा रहा है। पहले साल में कॉमर्स है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर कुछ और है। So why do I want to? I'll get confused and I'm not ready. Confused and it will be very large and Be very हमारा large. टाइम Yeah. खा जाएगा, Yeah. टाइम खा जाएगा Yeah. पार्ट 2 के लिए। Yeah. So break the rules. Rules are meant to be broken. I made a rule. I'll break it. जब मेरा दिल करेगा मैं अपने रूल को तोड़ूंगा भी। ठीक है? राइट। राइट। चलो अब कॉन्टेक्स्ट इज वेरी बॉडी इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ की बात करते हैं। देखो, बॉडी पैराग्राफ में तुमने अब डिटेल में बताना है। डिटेल का ये मतलब है कि तुमने ये जरूर बात बतानी कि कॉमर्स में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बाकी तीनों में क्या हुआ। इंक्रीज। सेम है कि कॉमर्स में डिक्रीज हुआ, बाकी सब में इंक्रीज। एंड यहाँ पे तुमने लिखना है कि सब में डिक्रीज हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ठीक है। नाउ यूल से टू मच डेटा, आई एग्री टू मच डेटा। इसलिए देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखो मैंने इसको लिखा 40 to 50%, मैंने सबको इकट्ठे लिया। मैंने क्या बोला, कितनी परसेंटेज है? 40 to 50%। ठीक है, ठीक है। सारे Around. में 40 to 50 है। यस सर, ऑब्वियसली। एंड ये कितने से इंक्रीज होगी? देखो यहाँ पे 5% से, मैंने बोला लगभग ये डिफिकल्टी 5% से इंक्रीज होगी, लगभग 5। 5%. Okay, in manufacturing it is around 6, in building around 3%, in services 4%. So it increased by 3 to 6%. That's what I wrote here. This difficulty increased by 3 to 4% in manufacturing, building, and services. By contrast, in services, the difficulty decreased by 6%. So commerce में ये difficulty decrease होगी, sorry, commerce में 6% से decrease होगी. Manufacturing, building, and services में it increased by around 3 to 6%, while building and while in commerce it decreased by 6%. देखो अब अच्छे से एक बार, if you are confused, it's a very complicated graph. Let's make it easy. Let's not make it complicated. देखो डेटा ज्यादा है, मैं दे नहीं सकता सारा का सारा। So first of all, पहले मैंने ये डेटा कैसे दिया, इसके लिए मैंने लिखा है 40 to 50%। 40 to 50%। सारे सेक्टर्स का मैंने इंडिविजुअली नहीं दिया। इंडिविजुअली देना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बहुत लंबा ग्राफ होता, मुझे नहीं देना था। यस सर। ओके, तो उसके बाद मैंने लिखा कितने से इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। 51 माइनस 45 इज 6%, 45 माइनस 42 इज 3%, 45 माइनस 41 इज 4%। तो मैंने लिखा 3 to 6% से इंक्रीज हो। 6%। क्लियर? किसी में 3 है, Yes, किसी में 6 है। 3 से 6 के बीच बीच में हो रहा है इंक्रीज। मैंने लिखा इन तीनों में 3 to 6% से इंक्रीज हो गया। बाय कंट्रास्ट कॉमर्स में 6% से डिक्रीज हो गया। ये लिखा मैंने। अब बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। No, Clear? sir. Can you do the same for the second unskilled also? Second paragraph for unskilled and third paragraph for technical. Is it clear? सर इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी सेम करेंगे। देख 26 इसमें भी सेम 28 हो गया। ठीक है, कितने से इंक्रीज हो गया? 2%। 21 से 23 हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया? 2%। यहाँ पे 22 to 19 कितने से डिक्रीज हो गया? 3%। 20 to 29 कितने से इंक्रीज हो गया? 9%। Sir, ठीक है, here we can say that 20 to 30%, या and the difference is 10%.
या तो इसमें लिख देंगे देख। सो देख अब ओके, around तो वी राइट 10%. सर्विसेज में कितने से इंक्रीज हुआ 10% से, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग दोनों में हाँ, कितने से इंक्रीज हो गया 2%, एंड कमर्स में कितने से 2%. डिक्रीज हो गया 3%। कैन वी राइट दैट? Yes, sir. देखो दोबारा देखो, एक बार डाउट है तो बताओ। ठीक है, इन इन दोनों में इसमें इंक्रीज हुआ 2%, इसमें 2 to 10%, around 2 to 10%, अलग लिख and देते, अलग लिख देते कुछ commerce. नहीं था। अलग लिख Okay, देते। सर्विसेज में कितने से इंक्रीज हुआ समीम 10%। around 10%, देन वी राइट मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग में अलग से कितने से इंक्रीज हुआ, just 2%. एंड देन बाय कंट्रास्ट कमर्स में कितने से डिक्रीज हो गया 3%। इज 3%. इट क्लियर? कुछ नहीं होता, 2 to 10 बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब छोटा लो, वो Okay, रेंज sir. इतना बड़ा रेंज नहीं लेना है। Or we can say that manufacturing and building, there are only 2% increase या देयर वाज ओनली 2% इंक्रीज। uh, हाँ, from 2003 to 2004. यस, वेरी गुड, क्लियर। Yes, पहले sir. सबका ऐसे ही देना है, 20 to 26% है सारे सेक्टर्स में। आई डोंट वांट यू टू गिव मी द डेटा इंडिविजुअली। सो पॉइंट वो नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट द डेटा, आई वांट टू नो वेदर दे इंक्रीज्ड और Decrease. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई डोंट केयर कि इसका 26 है, आई डोंट केयर कि इसका 21 है, मुझे जानना है कि ये Trend. रेंज ठीक है, और मुझे जानना है कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज Decrease हुआ। हुआ. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बताना है मेरे को। ओके, इज इट क्लियर? एनीवन हैज अ डाउट? लेट मी सी योर क्वेश्चंस। Okay, okay. So it was a complicated graph. I've tried to explain it. Now, सर इतना 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 कठिन टफ ग्राफ आता है एक फाइनल एग्जाम में? ये मैं अब देख, अब तो अब मत बोलना समीम टफ है। I've explained it so नहीं well. नहीं, मेरे लिए सर, मेरे लिए अभी आप टफ नहीं है। कोई भी टेबल आएगा तो आपका चेहरा याद आएगा और मैं खुशी खुशी से लिख दूंगा। आई विल डेफिनेटली डू दिस इंशाल्लाह। Okay, yes. But अब तो मैंने इजी कर दिया है, मेरे को लगता है अब इजी हो गया है। It was tough, पहले टफ लगता हो, अब बोलो इजी है, अब नहीं डिफिकल्ट है। सर या सर ये तो मतलब समझा गया सर, जो ओवरऑल में सर अनस्किल्ड का नहीं लिखा लिस्ट। लीस्ट में कभी नहीं लिखता अंश, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं लीस्ट लिखता ही नहीं हूँ। नहीं सर, द लीस्ट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग इन मैं नहीं टेक्निक। लिखता लीस्ट में, तेरे को पहले भी बता चुका हूँ, मैं लीस्ट नहीं लिखता हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं बचता लीस्ट लिखने का। मेरे को 3 कंपैरिजन करने होते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता लीस्ट लिखने नहीं सर, ओवरऑल में का। ओवरऑल की बात ही कर रहा हूँ, मैं तेरे को पहले भी बता चुका हूँ, मैं लीस्ट नहीं लिखता हूँ। ओवरऑल की बात ही कर रहा हूँ, बॉडी पैराग्राफ में तो लीस्ट भूल ही जा। ओवरऑल में नहीं लिखता हूँ मैं लीस्ट में, मैक्सिमम ही लिखता हूँ। मेरे को 3 डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन करने हैं। मैं वो करने गया ना, लीस्ट लिखने गया तो एक ही कंपैरिजन को 2 बार कर जाऊंगा, मुझे वो नहीं करना। मुझे डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन करने हैं। नहीं सर, थर्ड लाइन ओवरऑल की फर्स्ट लाइन में सेकंड वर्ड नहीं लिखा, लीस्ट डिफिकल्टी फाइंडिंग। मैंने वो नहीं करवाया, वो लिखा हो ये वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरे को मैक्स में देख, देख मैंने ना, मैं तेरे को वो कह रहा हूँ, ये वाला ग्राफ मत पढ़, मैं तेरे को वैसे कह रहा हूँ, इन जनरल मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ये मैम ने लिखा होगा, मैंने लिखा होगा, पर वो पुराना लिखा हुआ, मैं अब की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ अब, मैं जनरल ऐसे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ जो मैंने सिखाया है अभी। तो मेरा ओके वीडियो ओके। देखना, मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगा, तो मेरा वीडियो अटेंड करना, मैंने क्या बोला तो सुनना वो। ये वाली सिखाया ना अभी, इन जनरल डिफिकल्टी, इन ये वाला आपने पढ़ाया था अभी। हाँ, ये वाला सिखाया मैंने, और मैंने मैक्सिमम वाला बात बताया, मैंने नहीं मिनिमम वाला नहीं कराया, मैं वो नहीं लिखता हूँ। ओके ओके सर, ठीक ये है, इसका मुझे। नहीं लिखता हूँ इन जनरल अब। ठीक है, ओके, बिकॉज लंबा हो जाता है ओवरऑल। अगर बिल्कुल लिखने बाकी को प्रॉब्लम नहीं होगी, पर लंबा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को पुराना लिखा हुआ है ना, मैंने अब अपडेट नहीं करी है फाइल, वो 2023 के बाद अपडेट नहीं करी है। ठीक है, मेरी राइटिंग में भी चेंज आ गया। ओके, सो एनीवेज, इज इट क्लियर नाउ? यूसुफ, आर यू क्लियर? ये वाला लिखोगे कि शुड आई गिव यू अनदर वन? वुड यू बी एबल टू राइट दिस, ऑल ऑफ यू? सर या सर I have one problem. या I cannot write properly preposition in graph. We'll cover prepositions, okay. I mean, tomorrow, next class will be on prepositions. Somebody else also asked me to cover prepositions. I'll cover prepositions. Done? अगर preposition अच्छा हो जाएगा तो ग्राफ बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए।
ठीक है, we'll cover prepositions. Sir, could you please cover question number 267 ring road वाला question? वो outer ring road दिया process map का. मैप है वो, प्रोसेस नहीं है, मैप है. हाँ map का 267. ओके वेट. वो कैसे लिखना सर? वो